हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स। बच्चों हमने लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे जो है वो किसी भी सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होता है इंसिडेंट होकर के, तो वो किस लॉ को फॉलो करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक। सो लेट अस कंसीडर वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड वी आर पॉलिशिंग बैक ऑफ दिस सरफेस। ये हमने पॉलिश कर दिया इसके बैक साइड को। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस वी आर कॉलिंग, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. So if you draw a line normal to this reflecting surface, suppose through this point, then this line is called as normal because this is making an angle of 90 degree with this reflecting surface. So बच्चों ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। अब यहाँ से अगर हम कोई भी लाइट रे इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट कराएं, एंड वी आर कॉलिंग दिस वन एज incident ray. This one is incident ray, and this is the angle made by the incident ray I with respect to the normal we are calling. Then the ray will be this incident ray after getting incident reflected back into the same medium. Reflected back into the same medium. This is called reflected ray. This is called reflected ray, and the angle made by this reflected ray with respect to normal, we are representing this by small r. So let us write down that point where angle I is called angle of incident or angle made by the incident ray with respect to normal. This is called angle of incident or angle made by the incident ray, angle made by the incident ray with respect to normal. बच्चों likewise we are writing for angle r. So this is the angle made by the reflected ray with respect to the normal. So where angle r is called angle of reflection, this is called angle of reflection or angle made by the reflected ray with respect to normal. बच्चों ये जो बेसिक आइडिया हमने यहाँ से इस डायग्राम से लर्न किया है, इसी को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे while understanding the law of reflection of light. बच्चों this is the point where this light ray is coming, getting incident on this reflecting surface, and after reflection it is returning back to the same medium. So this point where we are drawing the normal also, the normal will also pass through the same point. So this is called point of incident. This is called point of incident, or what is that? Point of incident, or you can say incidence. Okay. Now after having the knowledge of this basic elementary idea, let us now understand law of reflection of light. So there are two statements. One statement, first statement we are writing here. Under law of reflection of light only we are writing the first statement. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incident, all the three lie in the same plane. Let us note down that point. The incident ray, the incident ray, the reflected ray, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incident, at the point of incident, all the three lie in the same plane.
सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट अंडर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा। सेकंड स्टेटमेंट वी आर राइटिंग, you may pause the video and you can note down the results. Okay, so second statement we are writing here only, we have space. So statement 2, what is that statement 2? Angle made by the incident ray with respect to normal is equal to the angle made by the reflected ray with respect to normal. What is that? Let us repeat that point. This incident ray, whatever they are angle making with respect to normal, we are calling as I, and this is a reflected ray. They are making an angle of R with respect to normal. These two angles are equal to each other. So the angle of incident is equal to the angle of reflection. So statement 1, statement 2. Statement 2 says the angle of incident is equal to the angle of reflection, or angle made by the incident with respect to normal is equal to the angle made by the reflected ray. That is, we can write angle I is equal to angle R. बच्चों यहाँ से कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज अगर कोई लाइट रे यहाँ पर इस पॉइंट पर 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अगर कोई लाइट रे 15 डिग्री के एंगल पर आकर के इंसिडेंट हो रहा है, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। So from this conclusion, from this understanding, we can write one more point. What is that? Let us understand. We are writing one point, special point or special note. Suppose we are considering this one as reflecting surface, and this is the normal. So अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, मींस नॉर्मल के अलोंग ही आ रहा है, इट मींस व्हाट? दिस इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, एंगल R will also be 0 with respect to normal. So this is incident ray. The reflected ray will again follow the same path, but it will be bounce back. यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, this will be reflected back on the same path. So this is the incident ray, this is the reflected ray. So from here we can say, if any light ray is getting incident normally to a reflecting surface, then it traces or it returns back to the same path. So normally incident ray reflected back along the same path. And what is the angle of incident? 0. Angle of reflection 0. How we are writing this 0 with the help of law of reflection of light, the second statement, because the angle made by the incident ray with respect to normal is 0, then reflected ray will also make an angle of 0 degree with respect to normal. So बच्चों, in this video this much only. यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर। तो इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करेंगे, और जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स आपको डिक्टेट किया है, एक रनिंग नोट्स आप लिखेंगे, एंड वी विल डिस्कस न्यू थिंग्स और मे बी न्यू कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।